Good morning, friends. Today I am Dr. Meenu Walia, PhD Microbiology, going to discuss about the topic nutrition in amoeba and the human digestive system. In our earlier video, we discussed about the various kinds of nutrition, that is autotrophic as well as heterotrophic nutrition. There are organisms which synthesize their own food, they are called autotrophic, and the organism which dependent on the other organism, they are used to call heterotrophic nutrition. And of course, we discussed various kinds of parasitic, saprophytic nutrition also. Then in today's topic, that how this nutrition process take place in amoeba. Amoeba basically it is a single cell organism, and all the functions, whether it is intake of food, digestion of food, absorption of food, or the assimilation of the food, and then finally egestion of the food, that is all carried out by the amoeba. अमीबा में क्या होता है आपका कि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता कि फूड को लेगा कैसे, रिलीज कैसे करेगा. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें सूडोपोडिया होते हैं. सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट. तो फॉल्स फीट होते हैं जिनकी हेल्प से ये फूड को कैप्चर करेगा और उसके बाद उसको एनगल्फ करेगा, अंदर लेके जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस. साइटोसिस मीन्स जब कोई भी सेल कोई भी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लेकर जा रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस. So one thing that is the pseudopodia and the another thing that is the phagocytosis. एक बार जब फूड अंदर चला जाता है, एक स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल. राइट. फूड वैक्यूल के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम क्या करेंगे, हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी फर्दर एब्जॉर्ब करती है. राइट. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड we will discuss these all things step by step. First of all, detection. अमीबा सेंस करेगा कि उसके नियर बाय यहाँ पर फूड पार्टिकल कोई प्रेजेंट है या नहीं. एंड अमीबा कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर के अंदर, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में. देन वो अपने फोल्स फीट एक्सटेंड करेगा और टारगेट फूड पार्टिकल को अंदर लेकर जाएगा. राइट. फूड जो है कंप्लीटली एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वो लेगा. इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग और फेगोसाइटोसिस. राइट. तो जितने भी एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी ऑर्गेनिक पार्टिकल है उनको ये कंज्यूम करता है. इसका फूड होगा कौन? इसका फूड कौन होगा कि जो भी स्मॉल प्लांट्स हैं, राइट, स्मॉल एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल जो भी वाटर में फ्लोट कर रहे हैं उनको ये अपने अंदर लेकर जाता है. एंड डेफिनेटली अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को ये रीशेप करता है. राइट. देन ये फूड वैक्यूल, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ये जाके मर्ज करेगा और वहाँ पे जाके डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे बायोलॉजिकल सीजर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट करती है. कन्वर्ट करने के बाद में जो वैक्यूल मेम्ब्रेन है उससे जितना भी न्यूट्रिएंट है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा. देन एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है? हम यूज कैसे कर रहे हैं उस चीज को. अब ये न्यूट्रिएंट है उसके साइटोप्लाज्म में गया है तो वो अपनी एनर्जी के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, ग्रोथ के लिए इन सब न्यूट्रिएंट को यूज करेगा. राइट. सो पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में, लिपिड्स को फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं. राइट. देन वेस्ट रिमूव होगा जिसको हम बोलते हैं इजेशन. अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाया हमारा अमीबा, वो सारा सेल से बाहर निकल जाएगा. उसके लिए भी इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, मीन्स कोई एनस नहीं है, कोई पैसेज नहीं है. तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू अपना जो वेस्ट डायरेक्टली सराउंडिंग वाटर में रिलीज कर देता है. राइट. सो सी इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ these process take. Then digestion take place, then absorption, then finally material release outside. Once again you can see false feet take the food inside,
then digestion, absorption, and finally egestion, right? Now next topic is our human digestive system. In human basically our जो प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन का, हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है, वो बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस होता है. सबसे पहले इंजेशन, कि हम फूड लेंगे कैसे, तो हम फूड कैसे लेते हैं, माउथ के थ्रू. उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है हमारा, कि जो भी हमने फूड लिया उसको ब्रेक डाउन करना सिंपल न्यूट्रिएंट्स के अंदर. थर्ड एब्जॉर्प्शन, कि जो भी फूड फाइनली स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, फर्दर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, वो सारा फूड हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ब्लड उसको डिफरेंट टारगेट सेल के पास लेके जाएगा. देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइज करना, उसको अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, फर्दर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम उस फूड को यूटिलाइज कैसे करते हैं. एंड देन द लास्ट इज ईजेशन. ईजेशन मीन्स कि जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा हमारी बॉडी, उसको थ्रू द एनस हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है, राइट. दैट इज कॉल्ड आर egestion, right? So in our system, human digestive system, in this mouth to anus, it is a 9-meter long tube, and various multiple organs are present in our digestive system, that is mouth, esophagus, stomach, small intestine, they all work in a sequence. Then beside this, we also need various kind of glands. These are specialized cells which release the secretions and enzymes. So in the mouth we have the salivary gland, then we have liver, then pancreas, which support the digestion, help in the process of the digestion. Specialized function, like in the amoeba we didn't have any particular organ for carrying out the digestion, but in our human body we have different organs perform specific mechanical and the chemical processes. So million of years we are refining the things, we are finding out the things. So this is our mouth, this is the buccal cavity, then this is the long tube, that is esophagus, then this is the stomach, this is your liver, then here the pancreas is present, this is our small intestine, which is the longest part of the digestive system, coiled tube it is, then this is our large intestine for removing the waste, and this is the anus. Got it? So our mouth mechanical and chemical action start here. Teeth, they carried out the mechanical action, they break down the food into smaller pieces. By chewing, we break down the food into smaller particles. Then tongue mix the food with the saliva. Now what is this saliva? In the mouth there is a gland, that is salivary gland, which releases this enzyme saliva. It contains the enzyme amylase. Now amylase word basically used to break down the carbohydrate molecules. So wherever the word amylase means carbohydrate will break down. So it break down starches into the simple sugars. And then food is converted into waters which easily swallow through this oral cavity, that is esophagus. Now in the esophagus, smooth muscles are present. These muscles contract and relax rhythmically, and this rhythmic contraction and relaxation is called peristalsis movement. This movement of the muscle push the food down the esophagus. It is a 25 centimeter tube which connect mouth to the stomach, and this process takes 5 to 10 seconds. Then in the stomach there is present acid, then mucus, and our enzyme pepsin. Three things are present: acid, mucus, and enzymes, that is pepsin. Now this, in the wall of the stomach there is again glands are present. From the stomach we use the term gastric. So gastric glands are there in the wall of the stomach. They release the enzyme pepsin, which is present in inactive form. So HCl
that is acid which is present in our stomach, it creates the acidic environment and the pH is around 1.5 to 3.5. Now this, what is the role of HCl? One thing, it kills the harmful bacteria which enter our body with the food and activate the enzyme pepsin that break down the protein into different kind of particle, that is amino acid. This stomach takes 2 to 4 hours and create a semi-liquid mixture called chyme. So from here, oral cavity, esophagus, our stomach, pancreas, liver, small intestine and large intestine. So next, the food from the stomach enter inside the small intestine, and in the small intestine, which is a 6 to 7 meter long tube, here the most nutrient absorption take place. In the intestine, the small intestine, various finger-like projections are present, which is called villi, which dramatically increase the surface area, right? Now, what is the function of liver? Liver is a gland which produces a juice that is bile, and it converted the large size fat molecule into the smaller size fat molecule, which process is known as emulsification. Why we require this? Why we convert this large size fat molecule into the small size fat molecule? So that our enzyme can efficiently work on these small particles. Then we have the organ gland, that is pancreas. It secretes the enzyme for different kind of particle, that is for protein, trypsin enzyme, for carbohydrate, amylase, and for the fat, lipase enzyme. Now the nutrient passes finally into the small intestine, is break down into smallest particle and absorb into the bloodstream. It takes 3 to 5 hours to process this food. Finally, the food which is undigested passed into the large intestine, which is 1.5 meter long tube. It absorbs the water and electrolyte and undigestible waste released outside the body. Besides this, beneficial bacteria is present which produces the vitamin K and B12. It absorbs 1.5 liter of water daily, store waste until the elimination, and take 12 to 48 hours to complete the process. So thank you for the today lectures. Goodbye.